ओके। अच्छा जी। तो खैर हमारे पास, अच्छा बाय द वे, सिर्फ तीन तीन यूनिट है हमारे पास। अगर वो यूनिट वन से स्टार्ट करेंगे तो यूनिट वन आपको पहले देना होगा, फिर यूनिट टू, और यूनिट टू पहले देना होगा, फिर यूनिट वन, यूनिट थ्री आप दे रहोगे मे बी। बट खैर, हाँ तो जी। यूनिट वन थोड़ा सा बड़ा है और यूनिट टू थोड़ा सा छोटा है, राइट? तो मे बी अगर आप यूनिट टू दे रहे होगे तो शायद वो अक्टूबर जनवरी के अंदर आप शायद यूनिट टू दे रहे होगे, और यूनिट वन और यूनिट थ्री शायद मई जून के अंदर दे रहे होगे, इस तरह से होगा शायद मे बी। हाँ जी, ऐसा ही। ऐसे ही है। तो बस ये जी। है। खैर हमने मई जून, हमने बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें जो मैंने वो करना है, तो हमने तीनों यूनिट के लिए प्रिपेयर करना है। और फिर अगर कोई बच्चा यूनिट टू पहले दे रहा होगा तो यूनिट टू हमारा तकरीबन जनवरी तक खत्म हो चुका होगा, जनवरी से पहले पहले मे बी शायद। तो ये पता नहीं, अल्लाह जाने। खैर देखते हैं। अच्छा जी, आ जाओ। तो खैर हमारे पास जो है, हमारे पास वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, राइट? एंड एक ऑब्जेक्ट जो है वो, अब दो केसेस हमारे पास पॉसिबल हैं, राइट? पहला केस ये है कि भाई बोथ द ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, राइट? दोनों जो है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। सो एट कांस्टेंट स्पीड, ओके। अब दोनों कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहे हैं, एंड वन विल ओवरटेक द अदर। ऑब्वियसली बात है, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट होगा वही ओवरटेक करेगा, राइट? सो जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट होगा इट शुड हैव द ग्रेटर स्पीड, राइट? सो मतलब ये है कि भाई लेट्स से कि हमारे पास जो इसकी स्पीड है वो हमारे पास है, लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकेंड, राइट? एंड इसकी जो स्पीड है वो लेट्स से 15 मीटर पर सेकेंड, राइट? दिस इज द केस वेयर द ओवरटेकिंग इज पॉसिबल। अगर दोनों की 10 10 होगी सो दे कैन नेवर ओवरटेक ईच अदर। अगर तो एक्स would have the speed lesser than y, then overtaking will also never possible. And साथ में क्या होगा कि the distance between them will also start increasing, right? Let's say the distance between them is um is let's say 100, okay? So if they're moving at a constant speed, so their distance will remain same forever, right? But if they're moving with a like x move with a lower speed than y, so the distance d will start increasing, right? And if x moves with a higher speed than y, then the distance d will start decreasing until the overtaking take place. सही हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सही है? सो अब मैंने आपको क्या, बोथ आर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, राइट? एक्स विद अ हायर कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वाई विद अ लोअर कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? अच्छा, अब लेट्स से let's assume that they both move this much distance, okay? And at this point overtaking takes place, okay? So ये हमारे पास है। अच्छा जनाब, and I'm considering this distance as x, okay? So, y will travel x distance in, let's say, t amount of time, in t amount of time, okay? And x will also have to cover this distance, right, from this point to that point in the same amount of time, right? To overtaking के अंदर याद रखना, overtaking के अंदर जो है ना, the time will be the same for both the objects, right? Like if the moment you are starting the whole thing, the racing concept, तो एक ही टाइम इंस्टेंट के अंदर जो है ना ओवरटेकिंग होगी, दोनों के अंदर एक ही टाइम होगा, राइट? सो वाई ने जो है वो इस पॉइंट से लेकर, it have to move to that point, okay, in t amount of time, okay? And जो x है उसने जो है वो यहाँ तक जाना है, यानी x have to cover the distance of 100 plus x, right, in the t amount of time, okay? अच्छा मैं डिस्टेंस को d कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, सही? d. So if I wrote for y, so y के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, राइट? You know that if you have the constant speed, you are only allowed to use the speed is equals to distance upon time and nothing else, okay? Like no equation of motion is allowed to use, okay? So speed is 10, okay? Time is unknown and distance is actually the d that it will going to travel before being overtaken. अच्छा, okay भाई। अच्छा जी, so this is the first thing. Now the second thing for if I wrote the equation for
y for x. So x is moving with 15 meter per second, and the distance is the distance it has to cover is 100 plus x, sorry, plus d divided by t, capital T. Okay, the time remains the same. Okay. So since we are interested in, let's say, in T or in D, so for T, अगर आपने T के लिए काम करना है, so like if you want to know how long will the object X take to overtake the Y, so उसके लिए अगर आपने काम करना है, so it will be, so if you're working for how long, तो आप उसके लिए क्या कर लोगे, just make D the subject, 15T minus 100 is equals to D, okay, and 10T is equals to D, right? And then just substitute both the equations. So 15D minus 100, sorry, 15T, and is equals to 10T, right? So it will be 15T minus 10T is equals to 100, and 5T is equals to 100, right? And T would be 5 seconds, 20 seconds. Okay. अहमद की ये बात समझ में आई? जी जी 20 seconds. Okay. Okay. So the important step over here is this step. Okay. If you focus on this step, so you can see that it contain, wait. So if you focus on this step, so it contain the difference of the two velocities. Okay. It contain the difference of the two velocities. अच्छा यहाँ पे t मुझसे रह गया. Okay, it contains the difference of the two velocity equals to the distance. Okay, so you can see that the higher speed minus the lower speed, and the distance between them, or the separation between them, okay, and divided by t, right? So अगर हम इसका एक जनरल फार्मूला बनाना चाहें, ओवरटेकिंग को जनरल फार्मूला बनाना चाहें, जनरल फार्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ, सो फॉर टाइम, सो t would be equal to the separation between the two cars divided by the velocity, the separation, the difference in velocity. Okay. So this is the general formula. Okay. So, yep. Now, so this is for the time, like how long will it take to overtake the other object, right? अच्छा जी. Okay. Acha, if you want to work out for the distance, so you have to make distance the subject. और अगर आप distance को वो बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी अगर आप देख लो, फिर you have to make time the subject. Okay. So उसके लिए जो है, यही वाली चीज आप देख लो. So just consider this thing and copy and paste. सही है. So for the distance, like how far, for how far. Okay. How long mean? Like the time, how much time will it take before, or will it take to overtake on how far mean the distance, कि कितने दूर जाके वो ओवरटेक करेगा. सही. सो उसके लिए जो है, वहाँ के पास हो जाएगा, um just make t the subject and 100 plus d over 15, and t is equals to d over 10. In that will be, just equate both of them. So d over 10 is equals to
100 प्लस डी ओवर 15, राइट। सो अब आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर के अंदर दोनों की वेलोसिटीज हैं, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो आपके पास सॉल्व हो जाएगा, राइट। कोई मसला भाई? नो। इसके ना एमसीक्यूज के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 15d इज इक्वल टू 1000 प्लस 10d, एंड इफ यू स्टिल डू, सो अब आपके पास हो जाएगा 15d माइनस 10d इज इक्वल टू 1000, राइट। 200। एंड 5d इज इक्वल टू 1000, कितना आ रहा है? 200। 200। ओके, गुड हो गया। जी। 200, right? So this is the explanation, right? So this is the concept of overtaking, right? So time तो निकालना like बहुत आसान है, क्योंकि it's just the difference between the two velocity, and the separation divided by the distance between the two velocity. This is a very simple concept, right? ये। अच्छा जी, एक सेकंड। अच्छा, अब लेट्स से अगर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दूं, सो इफ आई गिव यू car x, car x is moving with 12 meter per second, okay, behind car y, okay, which is moving with 8 meters per second, okay. Initially, sorry, initially both cars were separated by um 60 meters, okay. So अब आपने निकालना है how long will the car y will the car x takes to overtake car x. So how long will the car y or x takes to overtake car y? हाँ जी, what will you do? ओके। um, Just use a simple formula and solve this one, black wala. ओके फाइन। 6 seconds। 6 seconds, okay. 60 डिवाइड है, नहीं नहीं। ओ नहीं, सॉरी सॉरी। ठीक। 20 seconds। नहीं, जस्ट एक मिनट। हम्म। ओके। 15 seconds। हम्म, perfect. So you did 12 minus 8, right? So it will या। be 15 seconds. Good. अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया एक केस ओवरटेकिंग का, सही है।
जो दूसरा केस है ओवरटेकिंग का, उसके अंदर हमारे पास ये है कि if one of the object start accelerating, okay, and the other object is moving with a constant speed, right? And तीसरा केस है both are accelerating, right? But the fourth case is like quite difficult. The third case, the last case is quite difficult. तो हम सिर्फ दो ही डिस्कस करेंगे. ऑल द पेपर के अंदर मैंने फर्स्ट केस देखा सिर्फ, राइट, कि जिसमें कार कांस्टेंट स्पीड से मूव करी होती है. ठीक है, आ जाओ. सो इफ वी हैव केस टू, so let's say again we have the similar case scenario. Now you have to help me out, okay? So we have car X, we have car Y, okay? Car Y, right? So in this case, we have two possibilities. Either car Y start accelerating and car X moving with a constant speed, right? This is the first possibility. The other possibility is car X start accelerating and car Y is moving with a constant speed, right? So if car X is start accelerating, like the second case where the car X accelerates, so in that case, the overtaking will always be possible. Okay, but if car Y start accelerating, right? क्योंकि वो आ गया है. If car Y start accelerating, then it may be possible they both overtake, or it may be possible they won't, or it may be possible they overtake for a small amount of time, and then car Y overtakes car X again, and like उसके अंदर double overtaking हो जाएगी, right? समझ रहे हो आप? जी जी. सही हो गया. So वे keeping the things simple, ताकि सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, राइट? नाउ डिफिकल्ट केसेस के अंदर, डिफिकल्ट सिनेरियो के अंदर फिर आप उसको खुद लगा सकते होगे, राइट? सो लेट्स से इट इज starting from the rest, okay, and accelerating at 4 meters per second squared, okay. 4 meter per second square means every second the car X speed will be incremented by 4 meter per second. Okay. So in 0 second, it will have zero speed. In first second, it will have 4 meter per second speed. In the second second, it will have 8 meter per second speed. In the third second, it will have 12 meter per second speed. And this is what the definition of acceleration is. Right. And for Y, we have it's moving with a constant speed of 15 meters per second. Okay. And let's say the separation between them is let's say 80, or let's say 120. Look, again, the same case, similar scenario. Okay, let's assume that they both overtake at this point, a distance of d. They both travel a distance d before overtaking, right? So if we first work out for how long will they take, and then we work out for how far they've got. Okay, so for how long, we can do, we have to make equation of motion. अच्छा, अब equation of motion में मैं क्या क्या करूँ? For x we have to use equation of motion because it is accelerating. For y is just the simple equation, is just simple equation, speed वाली. hmm Okay. so which equation of Y की थी motion we तो use? Mm-hmm. okay. जी, y की थी तो 15 is equals to d upon t. 15 is equals to d over t. Okay. Okay. And do I use v is equals to u plus at for x? Do you use which one? V is equals to u plus at. V is equals to u plus at. Okay, you can use it, but is not it does not have the distance component, ना? अच्छा हाँ सही. जी.
Um, okay. Should I use v square is equals to 2as plus u square? You have initial velocity, acceleration, and distance. Um, I think no, because it does not have time. Okay, fine. Then I'm left with okay. How about s is equals to ut plus 1 upon 2 Yes, at yes, square? yes. Very good. S is equals to ut plus half at squared, right? Because it contains both the displacement or the distance and the time together, right? So in this Yeah, type of case, in this type of scenario, you have to pick an equation that contain both the variable, the distance and the time, right? Okay. yeah. So now the distance, it will have to cover how much the distance? What will you write in for the distance? 120 plus d. Very good. Since the initial velocity is zero, so this factor will goes out. Okay. Yeah, And half a and t is going to be the capital T and it is squared. Okay. So simplification 2t squared. So yeah, and this will be 15 t is equals to d. Now just substitute the d in. So it will be 120 plus 15t is equals to 2t squared. And you have to solve it simultaneously. 2t squared minus 15t and then minus 120 is equals to 0. It you may get an incorrect answer, maybe because मैंने just खुद ही अपने पास से बनाया question, but let's see. uh, okay, अब factors बन जाएंगे. क्या बन जाएंगे? नहीं, क्या मतलब? फैक्टर्स बन जाएंगे तो अच्छा, लाइक बेहतरीन है. ये कौन. मतलब like अच्छा you कैसे. have to solve it simultaneously quadratically. Either use the calculator for it or आई मीन लाइक डायरेक्टली तो नहीं हो सकता ना. नहीं. Like you can make factors directly. ओके. Just put it क्वाड्रेटिक in the फॉर्मूला calculator. लगाऊं. Hmm? Just put it in the calculator, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. आप लोग को आता है कैलकुलेटर से यूज करना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आती? नो नॉट रियली. No? Okay. Can you send me the picture of your calculator front interface? फाइन ओके. ये जस्ट 10 seconds. Okay. बिकॉज यहाँ पे जो है ना ए लेवल्स के अंदर दो चीजें आएंगी. एक साइमल्टेनियस इक्वेशन आएंगी एंड जो दूसरी होंगी ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी, राइट? एंड इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग योर मैथमेटिकल सॉल्यूशन. आप सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक दफे स्टेप लगा के दिखा दो, बाकी फिर कैलकुलेटर में भी रख के सॉल्व कर सकते हो और यू कैन जस्ट यूज इट डायरेक्टली इन द कैलकुलेटर. अच्छा जी, आपने ओके. भेज दिया. लेट मी सी. ओके. सो जस्ट प्रेस वेट. Press the mod key or setup key right beside the on button. ओके. Oh, सही है. And then press 5. I think वो EQN लिखा होगा equation, right? Right? 5 प्रेस करो राइट. हाँ ओके जी. फाइन. And 5 जब आपने प्रेस किया होगा then you have four different equation आपके सामने होगी. ऐसे ही. नहीं. Look, मैंने जो ना ये किया है. Let me show you. So when I first press this, so I end up getting this. Okay. And अच्छा. then um, I press 5, so I end up getting this. And then
I have to press 3 because 3 is like where is showing the quadratic equation, right? आपके पास आ रहा है सब? Um, Actually, photo is loading. Just a minute. So first picture is not loading, but the second picture has been downloaded. ओके, मेरी Okay, तरफ when से I दोनों के लिए press है। basically, yeah, हम्म। like when you ask me to press that mode or setup button, I get option number like when I press 5, it says GRA. It say what? It says um can you send the picture of like जो आप आ रहा है आपके पास? Fine, okay. नहीं नहीं, बगैर शिफ्ट क्यों होगा? वेट, यू आर गेटिंग टेबल्स। नहीं यार, टेबल के अंदर तो नहीं होगा। अम्म, इसके अंदर ऑप्शन कम क्यों है कैलकुलेटर के अंदर? Yeah, इट शुड हैव ऑल द, कैलकुलेटर के अंदर आपके ऑप्शंस कम है, इक्वेशंस का ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहीं से आता है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट लेट्स सी, खैर मैं देख के बता दूंगा फिर। ये तो इसके अंदर ऑप्शन कम है, सही, इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करनी पड़ेगी। और तो फिर प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए, मैथ्स का इसके अंदर प्रॉब्लमेटिक करेगा शायद। okay. बट खैर, सो अभी फिलहाल जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाओगे, सो चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ रहा है 2 - 15, -15 एंड -120। सो आई एम गेटिंग 12.3435 बेसिकली, 12.35। ओके, and the other answer is -4.85, right? But -4.85 is not possible, so you can ignore it because it is in negative. So the only thing that remains is 12.35 second, and this is the time where like after which the car X overtakes car Y. Okay, clear? Yeah. अच्छा जी, now these are the two concept of overtaking, and यहाँ तक हमारे पास जो है ना horizontal motion था। Now let's talk about the vertical motion। अच्छा जी, वर्टिकल मोशन इससे थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, बट इट्स मोर लाइक कि जो है ना आपको, आप कह लो कि थोड़ा सा टेक्निकल है, राइट? सो लेट्स सी। ओके, कम ऑन। ये जो है ना, अगर ये काम का हो गया तो क्या ही बात है। ये चल नहीं रहा, ये भी नहीं चल रहा। चलो खैर है, बेकार है।
छोड़ दें, बाद में देखेंगे इसको। खैर, सो हमारे पास है वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, ओके। अच्छा, वर्टिकल मोशन का सीन ये कि if you let's say if you throw the object, say if you throw the object, say, so it will travel a distance up, okay, and then it takes a U-turn and come down, okay, ये आ जाएगा नीचे। सही है, ऊपर गया एंड नीचे आया। सही है। सो अब हमारे पास क्या होगा, वी हैव टू फिगर आउट। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट केस वेयर लाइक from where you launch the object will land at the same position. Okay, this is the first case. The second possibility is you launch the object from a lower ground and it lands at a higher ground, right? And the third possibility is you launch from a higher ground and it lands at a lower ground. Okay, so these are the three possibilities, right? Like मतलब अगर जो है ना वो आप इसी को उठा लो, एक यहाँ पे ले लो, or if you let's say make the second possible case, so you launch the object from this point and it lands right here. Come on, pick हो जा, अरे यार, wait. So and it lands right here, okay, right here, okay. And the third possibility is, okay, you launch the object and it lands just यहाँ पे, right? Wait, यहीं पे रुक गया, right? So these are the three possible cases, right? With a vertical motion, okay. And this is also possible that if you just release the object from the top and it will fall vertically downward and hits the ground, right? Which is the concept of bouncing, okay. So ये एक vertical motion है जिसके अंदर आप object को launch कर रहे हो, right? So you are launching the object, right? Launching the object upward, right? And the other possibility is like the just dropping the object or releasing the object from a certain height or throwing the object from a certain height. So these are the few possibilities, right? The two possibilities, okay. So just releasing the object or throwing, releasing or throwing from certain height, okay. And वो possibility आपके पास ये हो सकती है कि let's say this is the object. If you are releasing, always going to be, the initial velocity will always going to be zero, and if you are throwing, the initial velocity will always going to be greater than zero, right? So this is the concept of throwing, and this is the concept of releasing. Okay, अच्छा जी, ये हो गया. Now, so let's first try to understand the concept of releasing, and then we'll talk about the concept of launching. Okay. So if you're releasing the object from a certain height, so the first thing that you always need to remember over here is that when you move vertically up, the gravitational field will going to be your acceleration. Okay, so we can say that first, um, in vertical motion, okay, gravitational, sorry, gravitational field will be equal to the acceleration.
This is the first thing to remember. Okay. अच्छा जस्ट एक सेकंड दे दो, अजान हो जाती है उसके बाद फिर करते हैं सही। Okay. ओके जी आ जाओ। सो वी हैव, एक तो ये चीज हो गई। अच्छा जी नहीं भाई अब ये चाहिए मुझे। सो एक तो पहला पॉइंट ये हो गया सही है। दूसरा पॉइंट उसके बाद है। दूसरा पॉइंट मेरे पास है कि जिसके अंदर इसको यहाँ पे थोड़ा सा रख देते हैं सही है, एंड दोनों को खींच के नीचे ले आए। सही हो गया परफेक्ट। सही। अच्छा सेकंड पॉइंट इज जो कि आपको याद रखना है, दैट इज कि हमारे पास जो है, इफ यू आर मूविंग अप, so acceleration will going to be negative 9.81. Okay, Okay. moving up, so acceleration will going to be negative 9.81, negative 9.81. Okay, and if you're moving down, so acceleration will going to be positive 9.81, right? अच्छा please keep in mind कि ये वाली जो चीज होगी, they won't mention in the question what is what the acceleration is. Okay, you have to figure out yourself कि acceleration क्या है। okay, by just reading the question कि भाई वो vertical वो motion कौन सा है, right? समझ रहे हो ना? अगर तो वर्टिकल मोशन है सो इट विल बी लाइक अंडरस्टूड सी बात होगी कि भाई एक्सेलरेशन उसके अंदर जो होगी वो if मूविंग अपवर्ड सो अगेंस्ट द ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव 9.81, राइट? एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 9.81। ओके, एंड at maximum height there will also be the acceleration, right? There won't be a zero acceleration at max height. Okay, so please keep in mind. Okay, so these are something that you need to remember in vertical motion, right? अच्छा जी अब आ जाओ। अब let's try to understand if we are if you're like releasing the object. Okay, so the first case is where we release the object. Okay, release the object. Okay, this is the first case. Okay, so while we are releasing the object, let me give you a scenario. Wait, so ये हमारी आ गई ball. Okay, and we are releasing it, and let's say this is the ground, right? And the ball is hitting the ground. Okay, and the distance till the ground is, चलो नीचे से ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज गोइंग टू बी लेट्स से 25 meters. Okay, now you have to find out how long will the ball take to hit the ground. Okay, नहीं नहीं सब नेग्लिजिबल है ब्रो, हमने देखा तो था। if we when while we were talking the equation of motion, तो उसके लिए हमने कंडीशन देखी थी ना।
while we are talking the equation of motion, ये acceleration की जो हम बात कर रहे थे और equation of motion की जब हम बात कर रहे थे, so acceleration velocity should be changing. The first thing, change in velocity should be uniform, right? And the motion should be in a straight line motion. Air resistance resultant forces should be constant, yeah, zero, right? Okay. Okay. So we are considering no resultant forces, no air resistance for now. Okay. अच्छा जी, फिर आप बोलोगे फिर वो कब कंसिडर करेंगे, while we discussing the forces, right? तो हम वहाँ पे फिर यहाँ पे वहाँ पे जो है ना फिर हम will consider will consider some resultant force and some air resistance, और हम देखेंगे कि उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है. ओके, तो खैर. Okay. अच्छा जी, सो यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, राइट? सो आई हैव गिवन यू वन थिंग, राइट? एंड कैन यू लाइक फाइंड मी हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड? Sure. Okay. हाउ लॉन्ग will it take So, to may I like should I like apply the equation and tell you the answer, or will we discuss step by step? you can apply the equation and you can tell me the answer. Fine. Okay. How much distance? Okay. 25. Come on. Done. Yeah, done. 2.26 seconds. 2.26 second. Okay, so you मस्ट यूज इक्वेशन. अच्छा जी, आपके पास डिस्टेंस दिए हुआ, टाइम निकालना, एक्सेलेरेशन भी मैंने आपने यूज किया होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर Yep. plus half a t square, and since you are releasing, so initial velocity is 0, so this factor goes out, and this is 25 multiplied by 2 divided by 9.81 divided by 9.81. Since it is moving down, so it should be positive, and you have to root it because it is squared. इसको ऊपर ले आए. So if you did that अच्छा rule. एक चीज. हाँ हाँ बोलिए. I divided it by 9.8. हाँ हाँ, just do 9.81 because like in A levels you have to consider three significant figure, right? वो O levels के अंदर 2SF के अंदर होता था. Okay. Fine. बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा आंसर में. आई एम गेटिंग 2.257 या 2.26. व्हाट यू गॉट? Yeah, I got 2.26. Yeah, fine. So, सही. Perfect. So this is done. Okay, this is one type of the motion where you have like where you're throwing the object and with a zero initial velocity, right? And this is a very simple case. Now let's talk about the launching. Okay. Acha, by the way, over here in vertical motion, we have some quantities जो कि understood होती हैं. Like if you're releasing it from the rest means you'll have zero initial velocity. So you just have to read the question carefully whether it will have a zero initial velocity or what, right? Now we have the launching concept. Okay. So in launching concept, um, if let's say, अच्छा, obviously इसका भी कुछ ना कुछ concept आपके पास होगा. So if let's say you're launching, so you should have the velocity. आड़ी टेढ़ी लाइनें कैसे खींच रही हैं, सीधी सीधी लाइनें नहीं खींच पा रही हैं मुझसे. सही है. अच्छा, so first thing first, that you should have velocity, initial velocity greater than zero, right? If you have initial velocity lesser than zero, so it will fall down, right? So वो फिर जो है ना releasing वाला motion हो जाएगा, right? And when you got to the maximum height, your speed will always going to be zero. Yes, clear? ये वाला point clear ना? yeah.
So the object will be momentarily at rest at this point, right? But please keep in mind at that maximum height wala point पे भी acceleration will going to be 9.81. Okay, please don't consider it as zero. Okay, because acceleration is basically the concept of the change in velocity, and the change in velocity is being taken at the two different point, right? So if you're considering one point right here, so the other point would be या तो पीछे होगा उसके या it would be like in front of the point, right? So if you're considering one point right here, so the other point would maybe in front of the previous point or behind the previous point, right? Clear? So when you consider these 2 points and find the acceleration, you will end up getting 9.81. Okay. So everywhere in the vertical motion, you will always going to have the acceleration 9.81, right? It could either be positive or negative depending upon your direction of motion. Okay. Clear? Okay. Fine. So this is the routing. Right. Now, since you're launching and after getting after reaching the maximum height, the ball will fall back. So when moving up, it will have negative 9.81 of acceleration. Okay. And when moving down, it will going to have positive 9.81 um, meter per second square of acceleration, right? So these are something that should be known. At least these three things. These three things should be known. Okay. And let's try to solve a scenario. Okay. So this is a concept. Now let's try to have a question. So yeah. So let's say I'm launching the ball. Ball is launched at with let's say 12 meter per second. Okay. This is the first thing. Okay. And it reaches the max height of um 36 meters. Okay. And yeah. Okay. So these are the two quantities I'm giving you. And now I'm asking you find, yeah, how long will the ball take to land? Okay. सही हो गया. अच्छा, concept scenario क्या है कि you have launched the ball from this position, it goes to the maximum height and then it come back, right? ये point, ये concept है. Okay. So okay, just try yourself and then we'll try together. Okay. Oh, done. Um, the issue is that I'm unable to make t the subject in s is equals to ut plus 1 upon 2 at square. है.
नो, डोंट यूज दैट इक्वेशन, यू वोंट गेट द आंसर दैट वे, बिकॉज वो मुश्किल हो जाएगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यू कैन मेक द सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक स्क्वायर होगा और एक टी होगा, राइट। आई टेल यू, कल की क्लास में बताऊंगा कि उसको किस तरह से यूज कर सकते हो इस केस के अंदर, राइट। अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, so you won't make anything the subjects, because 36 and 12t minus 9.81 over 2 and t squared, right? So यहाँ पे आप फंस जाओगे, राइट। सो देन आई टेल यू, कल की क्लास में बताऊंगा, वो भी नहीं बताऊंगा। सो अभी सिंपल से इसको सॉल्व करना है, कल की क्लास में इसका एक और तरीका भी मैंने समझाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर हियर एंड हाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द क्वाड्रेटिक फार्मूला विल बी यूजफुल इन दीस टाइप ऑफ केसेस, राइट। कि वो दो आंसर बताएगा, वो दो आंसर क्या क्या चीजें बता रहे होंगे, वो कल की क्लास में मैंने बताना है। अभी के लिए फिलहाल इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, राइट। आसान तरीका ये है कि जस्ट स्प्लिट द मोशन इनटू टू फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट, ओके। समझ रहे हो ना भाई? सो जी जी। नाउ द मोशन बिकम कि उसने यहाँ से स्टार्ट किया एंड इट गेट टू द मैक्सिमम हाइट। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 12, द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 9.81 एंड द फाइनल वेलोसिटी इज 0, राइट। So just find out the time taken and just multiply it by 2, so you'll get the time for both way, right? समझ रहे हो ना? जी जी। So okay भाई, कर लेते हैं। So A is equals to V minus U over T, okay, and it will going to be T is equals to minus 12 divided by minus 9.81, so you'll end up getting 1.2, I mean end up getting 1.22, right, and when you times it by 2 you'll get the total time as 2.44, I think so, yes. जी। Perfect. ओके। सो बस अब आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। सही, कल की क्लास में मैं ये बताऊंगा कि हाउ you have to use the quadratic equation in such type of cases and how will it be like useful for you guys, okay? सही हो गया? चलो बस अभी आज की क्लास यहाँ पे एंड जी करें, ठीक सही है। है, चले चले, ओके, टेक केयर, हाफिज। अच्छा, एक सवाल जस्ट, बोले बोले। ये जो इक्वेशन है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये हम्म। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल है? यस। अबे ओके बट ब्रो। जस्ट, बोलो बोलो। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल होगी, देन डू वी रियली हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन दिस क्वेश्चन? ऑलवेज, इसके अलावा तो पॉसिबल, लाइक जितनी भी 5 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं हम, फॉर एवरी इक्वेशन टू बी यूजफुल वी शुड हैव द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वरना पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा वो नहीं हो सकता फिर, जी। वो फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिर हो जाएगी उसके अंदर, समझ रहे हो? अच्छा ठीक ओके, है। वो मैथ्स के अंदर आप शायद पढ़ोगे, अगर आपके पास मैथ्स है तो वो मैथ्स के अंदर मैकेनिक्स के उसके अंदर आ जाएगा शायद, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। अच्छा, सो बस एक लास्ट बोले बोले। क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर चूंकि डिस्टेंस भी दिया हुआ था 36 मीटर्स, हम्म। तो आपने ऐसी क्यों नहीं इक्वेशन पिकअप करी जिसके अंदर डिस्टेंस भी यूज हो जाता? हम वो कर सकते थे, सही है, मतलब हम वो डिस्टेंस वाली इक्वेशन भी पिक कर सकते थे, बट मैंने बस एक कॉन्सेप्ट जहन में ना आपको बताने के लिए यूज किया था कि इफ यू यूज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो उसको आप सॉल्व क्यों नहीं कर सकोगे, राइट? क्योंकि आपने उसको पिक तो कर लिया, बट यू आर अनेबल टू सॉल्व इट, क्योंकि उसके अंदर क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर आ रहा है, राइट। सो यू आर अनेबल टू मेक टी द सब्जेक्ट, राइट। सो मुझे ये बताना था कि इफ यू पिक दैट इक्वेशन, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? पहली चीज, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेके उसे सॉल्व होगी, राइट। एंड उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है इस टाइप की क्वेश्चन की, दैट यू कैन जस्ट स्प्लिट द वर्टिकल मोशन, द लॉन्चिंग वाला मोशन इनटू टू पार्ट्स एंड यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई बाय टू, ओके। क्लियर हो गया? सो बेसिकली दो चीजें ओके। आपके जहन में लेके आनी थी, एक तो ये कि एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप इस यूज तो पिक तो कर सकते हो, बट यू कैन यूज इट मे बी, और यू हैव टू यूज इट विद अ quadratic formula, first thing. And the alternate path or the alternate method to solve this type of question is to split the motion into half and just solve it for one part and then times it by two for the other part, okay. So ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। ये दो चीजें बतानी थी, तो एक चीज मैंने बता दी है, सही है। और दूसरी चीज वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कि वो थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी मैथ्स की इन्वॉल्व है उसके अंदर, सही है। और इसके अंदर मुझे भी थोड़ी सी कैलकुलेशन पहले से करके रखनी होगी, अदरवाइज विल एंड अप गेटिंग एन इनकरेक्ट आंसर और इनकरेक्ट इक्वेशन, राइट, तो वो नहीं हो सकेगा। सो उसके लिए मुझे पहले से
इक्वेशन वर्कआउट करके रखना पड़ेगा, सही है। सो इस वजह से मैं भी उसको नहीं बता रहा हूँ। सही हो गया। जी ठीक है। बस एक और चीज, वो जो पहला मेथड जो आपने बताया कि उसे स्प्लिट कर दूं, हम्म। तो उसके लिए फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को इस्तेमाल करूं? उसके लिए कोई और भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, मतलब u प्लस एटी के अलावा कोई और भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, राइट। अगर आप s इक्वल्स टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करोगे तो आप तब भी यूज कर सकते हो, राइट। लाइक इफ यू आर यूजिंग, एक सेकंड मैं जरा इसके अंदर दोबारा से आने दो। अगर आप इसके अंदर जो है s इक्वल्स टू यू टी के बजाय s इक्वल्स टू वी टी यूज कर लो, बिकॉज यू नो दैट द फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, राइट। सो इफ यू यूज s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, सो आप तब भी यूज कर सकते हो, राइट, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो यू विल एंड अप कैंसलिंग दिस फैक्टर, राइट। सो ये और ये चीज बच जाएगी, सो आप वहां से टी निकाल सकते होगे, राइट। समझ रहे हो आप। जी अच्छा, कैन हाउ अबाउट आई यूज लेट्स से s इज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन टू एंड देन मल्टीप्लाई बाय t जो है। एस इज इक्वल्स टू यू प्लस, हाँ वो भी यूज कर सकते हो, यू प्लस वी अपॉन टू और मल्टीप्लाई बाई टी। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, ओके फाइन लेकिन लेकिन ठीक है। लेकिन लेकिन जब आप वो दो चीजें यूज करोगे ना तो ये दो आंसर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे, सही है। ये दो आंसर, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखाऊं, वी टी से अगर मैं यूज करूँ एस इक्वल्स टू वी टी, यानी 36 इज इक्वल्स टू वी टी जीरो हो जाएगा, और हाफ ए और टी स्क्वायर जो है ना ये आ गया टी स्क्वायर, राइट। सो 36 इंटू टू डिवाइड बाई 9.81, तो अंडर रूट 36 इंटू टू 72 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9.81, सही है। सो आई एम गेटिंग 2.7 फ्रॉम दिस वे, सही है, 2.7 फ्रॉम दिस वे, सही है। तो अब ये मुझे बताना है कि ये क्यों आ रहा है, सही। ये जो चीज आ रही है ना, ये जो दो आंसर अलग अलग आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, सही, ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा। ये इसमें मतलब ये नहीं है कि हम वहां से यूज करेंगे अलग आंसर आ रहा है, यहाँ से यूज करेंगे अलग आंसर आ रहा है, ऐसा होगा नहीं, सही है। ये मुझे बताना है कल के अलग आंसर क्यों आ रहा है, एक्चुअली मैंने जस्ट क्वेश्चन रैंडमली बना दिया, सही है। तो इस वजह से अलग आंसर आ रहा है, आई हैव टू कैलकुलेट बिफोर मेकिंग द क्वेश्चन, ताकि प्रॉपर दोनों तरीके से वो सॉल्वेबल हो, राइट। ये कॉन्सेप्ट है, समझ लो। जी जी सही, तो यानी एग्जाम के अंदर मेरे पास इक्वल ही आएगी ना हाँ वैल्यू? जी हाँ जी हाँ जी, वो इक्वली आएगी। फाइन ओके ठीक है। सही हो गया। चले, चले जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।